साहिल बेस, हेलो बेस। बेबी को बेस पसंद है। एफएस टेक, हेलो। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पल के झुकी और उठने लगी तो बोले से उसका सलाम आया। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पल के झुकी और उठने लगी तो बोले से उसका सलाम आया। एक और गड़बड़ हो गई। पक। How long does matchmaking take on Bluestacks? Not much. हेलो हेलो हेलो। इसका गेम चल रहा है, ठीक है। मैं बाहर आ चुका हूँ, तो अपन एक गेम लगा लेता है। अरीना गन गेम, एपीपी गन गेम। ओके स्टार्ट। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पल के झुकी और उठने लगी तो हाय से उसका सलाम आया। Let's go! This is a simulation game set in a virtual world. Let's go! And does not Let's represent go. real life. The blue Please team has play in scored moderation. for the first Take time. frequent breaks. Team match. And Let's play go. responsibly. Nice shot. Clear. Dead. Clear. Kill. नीचे भी लेटे हुए हैं भैंस। No mercy. Enemy down. Expired. Nice shot. Cover me. अबे अबे मैंने इतना मारा तो सही मुंह पे, मरा क्यों नहीं? Reloading. Killing spree for the blue team! Expired.
फक। No mercy! The blue team is about to win. Nice shot! No mercy! फक। लूसीफर गेमिंग हेलो। Dead! फक यार। अबे हट बहुत सो रही है चूतिए के पट्टे। सभी के सब डैमेज है भाई ये। अबे कैसे चूतिया टीममेट है बे। Expired! Blue team victory! लेट रखा था। फक यार हेलो यार। हेलो नीरज। तुम लोग कब आए भाई। Oh, what you do to me? मेरा अभिजीत कहाँ चला गया। What connection do you want to develop with अभिजीत? दूसरी स्ट्रीम हाँ वो वाली में कुछ बकचोदी होगी। मेरे को ये देखना है कि क्लैन कहाँ से बनाते हैं इसमें कहीं क्लैन बनाने का ऑप्शन है क्या। लेकिन कहाँ है मेरे को समझ नहीं आ रहा भूल गया। अभी तो देखा था मैं थोड़ी देर पहले। ये क्या है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है। ये झांडू दा गांडू कौन है यार। हैं? झांडू दा गांडू कौन है।
मैं भूल गया कौन। इटली क्यों दिखा रहा है यहाँ पे? इटली, आई एम नॉट फकिंग इटली। इसमें कोई भी स्किन परमानेंट नहीं मिलती क्या? मेरी सारी स्क्रीनें गायब होती जाती है हर दिन। गन की स्किन भी चली गई सब। Why this Kolawari, Kolawari, Kolawari D? Why this Kolawari, Kolawari, Kolawari D? नहीं मिलती। पता नहीं परमानेंट मिलती नहीं मिलती, मुझे नहीं मालूम यार। डेली स्किन गायब होते जाती है मेरी, तो मेरे को समझ में नहीं आता। और स्किन पे कहीं लिखा भी नहीं है कि कितने दिन के लिए है करके। अब ये मिली है, ये कितने दिन के लिए है मुझे कैसे पता चलेगा? पता अपने आप ही गायब हो जाती हैं। पैसा देना पड़ता है। अच्छा, तो जो स्किन यूसी से लेते हैं वही परमानेंट मिलती है, बाकी गेम से हमेशा टाइम पास के लिए होती है मतलब। गॉट इट। अबे स्टार्ट हो गया स्टार्ट। Why this कोलावारी कोलावारी कोलावारी। अभी जो मेरी, जहाँ मैंने एग्जाम एग्जाम दिया है, अगर मेरी जॉब पक्का हो गई ना और लग गई ना, तो फिर तो मज़ा आ जाएंगे। फिर तो आराम से स्ट्रीम करूँगा, मेरे को टेंशन ही नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं एसी वेसी लगा लूँगा यार। इतने अझेल पसीने में पूरी टी शर्ट गीली हो जाने तक ऐसे नहीं खेलना पड़ेगा। मैं आराम से स्ट्रीम कर पाऊंगा, आराम से गेम खेल पाऊंगा। फिर हमको भूल जाओगे यच। हु द फक आर यू? नीरू, नीरज गेमिंग वाई टी। हु है मेगा लोल। नीरज का व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, हेलो एमजी भाई। थोड़ी देर बाद बंदे को मेरी प्रोफाइल ही नहीं दिखेगी। फिर नीरज सोचेगा फोन मिला के देखता हूँ। नीरज फोन मिलाएगा, ट्रिंग ट्रिंग जाएगी। उसके बाद जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो व्यक्ति अभी बिजी है आएगा। उसके बाद नीरज मिलाएगा तो मिलाते ही कट जाएगा अपने आप। Game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. ठीक है नीरज? Frequent breaks and play responsibly. ठीक है ना? हेलो 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 बीजी माई प्रो प्लेयर। हेलो 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 हेलो। ठीक है ना नीरज? ऐसा ही करूंगा हाँ? नीरज फिर स्ट्रीम पे आएगा, स्ट्रीम पे भी इग्नोर। खाली ऐसे हाय लिखेगा, हाय, बस। मैं बताया एक बार मैंने अपने मॉड्स को सैलरी भी दी थी।
जब मेरी पहली बार यूट्यूब से पेमेंट आई थी, मुझे आज याद आया। और मैंने, और उसमें से एक बंदे ने क्या बोलते हैं, पहले मांगा, मतलब मैंने उसे बोला कि अपना नंबर दे, मैं रुपए भेज रहा हूँ। मैंने भेजे, उसके बाद बंदा खुद ही कंफ्यूज हो गया कि सच में आए हैं पैसे नहीं आए हैं। मालूम है अंकित ने बताया था, अंकित था ही नहीं तब। Oh, what to do me? What to do me? Oh, what to do? आजकल वाईटी देखने का मन ही नहीं करता, क्योंकि तुम्हें अच्छी चीजें नहीं मिलती है ना देखने को। और वाईटी देखने का मन इसलिए भी नहीं होता क्योंकि तुम्हारी चॉइस बहुत लिमिटेड है। ऐसा मेरे रूम वाले के साथ भी है। वो ना बोर हो जाते हैं। वो कहते हैं यार कुछ है ही नहीं देखने को, कुछ करने को, क्योंकि उनकी चॉइस ही लिमिटेड है। या तो पॉलिटिक्स, या फिर मतलब तुम समझ रहे हो ना, जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी चॉइसेस क्या होती है, मतलब उतनी है, लिमिटेड है। मतलब ना हॉलीवुड मूवी देखना, ना इंग्लिश कोई वीडियो देखना, ना इंग्लिश गाने सुनना। तो लिमिट होती है तो बोर हो जाता है इंसान। अनलिमिटेड होते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तुम्हें अपनी लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। क्रोम देखने में मजा आता है। डायनासोर वाला गेम, वो भी बड़ा सही है। अरे कल मैंने एक वीडियो देखी, मैं उसको इंस्टाग्राम पे शेयर करना चाह रहा था, लेकिन क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से वो जिनके 10,000 या 1,000 फॉलोअर कितने ज़्यादा होते हैं समथिंग, जो वही लिंक शेयर कर सकते हैं उसमें। तो वो शेयर नहीं हो रही थी, लेकिन वो बड़ी मस्त वीडियो थी यार। मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा उससे मतलब ऐसा लगा कि हाँ मैं भी ऐसा हूँ। मतलब उसने मेरे बहुत सारे सवालों का आंसर था उस वीडियो में। तो मैं थोड़ा कल लेस कंफ्यूज हो गया। मस्त वीडियो थी यार वो। हाँ शायद स्वाइप अप वाला आता है 10K पर, हाँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी वो वीडियो, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होगे तो, लेकिन वो इंग्लिश में है, फिर बात वही हो जाती है ना। मैं कल सोच रहा था कि मैं स्ट्रीम पे दिखाऊंगा, फिर मैंने सोचा कि लेकिन यार वो इंग्लिश में होगा। अब ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आती है, लेकिन वीडियोस में समझ नहीं आती ना लोग। ऐसा कुछ आएगा तुम्हें सर के ऊपर से ना चले जाए शायद। लेकिन अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मस्त वीडियो थी यार वो। क्या पता तुम्हें भी उससे कुछ फायदा हो। मस्त वीडियो थी वो। दिखाओ, दिखाऊंगा इस गेम के बाद दिखाऊंगा, अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो, इफ यू कैन वेट। व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, व्हाट्सएप पर तो हाँ, व्हाट्सएप में भेज सकते हो। लेकिन अगर तुम मेरे साथ देखोगे तो ये होगा ना कि कुछ बातें मैं शेयर करूंगा तुम्हारे साथ, तुम तो उससे क्या होगा, नॉलेज और थोड़ी बढ़ेगी। मैं सोच रहा था सुगत भाई आते तो फिर साथ में देखते, सुगत भाई को थोड़ा इन चीज़ों की नॉलेज है ना, तो उनके साथ मज़ा आता है डिस्कस करने में। तुमने देखा होगा जब भी सुगत भाई आता है, मैं कुछ ना कुछ टॉपिक तो उठाता ही हूँ, सुगत भाई के साथ मज़ा आता है डिस्कस करने में, क्योंकि सुगत भाई आजकल जॉब में बिजी है ना। Shit। सुगत भाई का मज़ा आता है स्ट्रीम। मस्त वीडियो है वो।
भेज दूंगा, व्हाट्सएप में भी भेज दूंगा तेरे को न्यूज़। एक्वा गेमिंग। हेलो हेलो हेलो। कौन से टॉपिक पर है? हाँ, नार्सिसिस्ट के बारे में हो। नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट जानते हो तुम क्या होता है नार्सिसिस्ट? मेरे को सही तरीके से बोलना नहीं आ रहा। नार्सिसिस्ट क्या है? नार्सिसिस्ट पर्सन बोलते हैं ना। नार्सिसिस्ट का मतलब अगर तुम गूगल में सर्च मारोगे तो बेसिकली वहां ये दिखाएगा कि क्या बोलते हैं, जिसको अपने से बहुत ज्यादा प्यार होता है। मतलब जैसे लोकी है ना, लोकी। लोकी कैरेक्टर देखा है तुमने? लोकी नार्सिसिस्ट है। जैसे उसको लगता है कि सब कुछ उसके हिसाब से ही होता है, पूरी दुनिया उसके ही इर्द गिर्द घूमती है। मतलब जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो सोचते हैं कि पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है, सब उनके हिसाब से चलता है, उनको नार्सिसिस्ट कहते हैं। मतलब अच्छी वीडियो है। मतलब गूगल में ये डेफिनेशन लिखी है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है नार्सिसिस्ट, वो उस वीडियो में है। मतलब और मुझे उससे ये डाउट मेरा क्लियर हुआ कि मैं ऐसा क्यों हूं। मतलब मैं ऐसा क्यों हूं तो नहीं, मतलब जो मुझे चीजें हैं, जो मेरे अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें बताई गई हैं। मस्त वीडियो है। मेरी आईडी सर्च करो। ओके ब्रदर, आपकी आईडी सर्च करते हैं। सर्च, सर्च रिपोर्ट लिखा है, ये तो इमोट्स है। फिनिश्ड अलाइव, ये तो इधर उधर के लिए है। ये मेडकिट है। गन गन, ये कहाँ पे सर्च करते हैं? सर्च, सर्च 5283631487 सर्च, सर्च। अरे ब्रदर बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी आईडी। मतलब कर लिया सर्च ब्रदर, वाह मज़ा आ गया ब्रदर। इतनी अच्छी आईडी, वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर दिया सर्च ब्रो। बहुत बढ़िया यार। तुम तो जहर हो जहर, एकदम मस्त आईडी बना रखी है यार। गुड गुड। आह, नीरज मेरी स्ट्रीम लैग होगी तो बताना, क्योंकि मैंने स्ट्रीम ना बंद कर रखी है, मेरे को दिखेगी नहीं। तो अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मेरे को बताना, ठीक है? कैसे पेपर चल रहे? कैसे पेपर चल रहे? मतलब समझा नहीं मैं। मेरे समझ नहीं आया।
हेलो हेलो। मतलब क्या कर रहे स्टडीज? मैं स्टडीज कुछ नहीं कर रहा ब्रदर। अच्छा, तो एग्जाम के लिए कंफ्यूज हो रहा है। मैं दोबारा बताता हूँ। मेरा किसी स्कूल का किसी स्टडी का एग्जाम थोड़ी ना हो रहा है। मेरा ऐसा हुआ ना, मैं जैसे गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए एग्जाम होते हैं, वैसे ही आजकल क्या होता है, अब कोरोना चल रहा है, तो तुम्हें अगर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब चाहिए तो तुम वहाँ जाके इंटरव्यू नहीं दोगे तो क्या होगा, आजकल इन लोगों ने एग्ज़ाम निकाला है। मतलब जैसे मैं अमेज़ोन में जॉब मेरे को करनी थी, तो अमेज़ोन का एग्ज़ाम था। तो अमेज़ोन के एग्ज़ाम में क्या होता है कि उनके हिसाब उनके वाले सवाल होते हैं। तो 20 एग्ज़ाम हुए थे 2 घंटे के अंदर, वो एग्ज़ाम हुए, उसी में ही एग्ज़ाम में ही मतलब इंटरव्यू था। मतलब जैसे कि इंटरव्यू में जो सवाल होते हैं वही एग्ज़ाम के अंदर भी थे, मतलब। तो ऐसा भी था। इंग्लिश का टेस्ट था, उसमें ग्रामर टेस्ट, बहुत कुछ थे, मतलब टेस्ट टेस्ट वो था। तो वो मेरा हो गया था, जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले बताया था, 2 आवर का। फिर कल क्या हुआ, कल अब पहली बार जो हुआ था वो सब कुछ लिखना वाला था, ठीक है, लिखना या फिर टिक मारने वाला। अभी कल जो हुआ था, कल फ़ोन पे हुआ था। फ़ोन पे क्या था कि एक नंबर दिया था उनने, उस नंबर पे कॉल मिलाना था। और उसमें एक एआई है कोई, उनकी कोई एआई होगी जो ऑटोमेटिक वॉइस आती है, मतलब वो बोल रही थी, तो मुझे उसका आंसर बोल के देना था। वो हुआ, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक फॉर्म था जिसमें वही तुम्हारा एड्रेस, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या है, 10th पास 12th पास कहाँ से किया, ये वो सब आंग बसोड़ा वो था। वो फिलअप किया, साइन किया और सबमिट कर दिया। सब क्लियर हो गया। अब बस वो मेरा जो फॉर्म है वो रिव्यू करेंगे, और वो रिव्यू करने के बाद फिर वो बताएंगे कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ या नहीं। बस। स्टडी कुछ नहीं कर रहा मैं। मतलब स्टडी तो ऐसे तो कर ही रहा हूँ, मतलब किसी पर्टिकुलर बुक वुक का स्टडी नहीं कर रहा। होगा फिर सिलेक्शन, वही अभी पता नहीं चला है, मेल आनी है। मैं अभी हर टाइम वही मेल ही देखता रहता हूँ अपनी, कि मेल आई या नहीं आई, मेल आई या नहीं है। उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। आएगी तो बताऊंगा मैं तुम्हें। इसमें बड़ा स्कोप होता ना यार, स्कोप भी तो नहीं है मेरे पास। स्कोप चाहिदा है, स्कोप चाहिदा है। किसी के पास भी बड़ा स्कोप नहीं है भाई। और मैंने ये अभी फोट्रेक्स को बता नहीं रखा है, वो भी करो और ये यूट्यूब भी करो करो। फिर तो क्या हुआ, फिर बढ़िया सैलरी आने लगेगी ना, तो फिर मैं एसी वेसी लगवा लूंगा। तो अभी वही तो मैं कह रहा था कि जॉब अब लग जाए ना एक बार, तो फिर आराम से एसी वेसी लगवाऊंगा। फिर क्या होगा कि मैं रात को स्ट्रीम कर पाऊंगा। अभी तो क्या होता है, जेल गर्म हो जाता है, गर्मी में खेलने का मन भी नहीं करता, सर दर्द हो जाता है। फिर मैं थोड़ा कंप्यूटर भी अपग्रेड मारूंगा, एसडी कार्ड लगवाऊंगा, और फिर एसी वेसी भी लगवाऊंगा, तो फिर रात को मैं स्ट्रीम कर सकता हूँ। फिर एक शेड्यूल बन जाएगा ना। अभी तो ऐसा ही सब ऐसे ही चल रहा है। फिर सब आराम से हो जाएगा, फिर कोई टेंशन वाली बात तो नहीं रहेगी ना। और फिर एक दो 2 सालों में 40,000 सैलरी हो जाएगी। उसके बाद फिर पैसे बचाने शुरू। उसके बाद अपना फ्लैट, बस बढ़िया। फिर तो
वहां स्ट्रीम करेंगे आराम से करते हुए। फिर तो मैं अपने घर पे भी कैमरा लाऊंगा इधर उधर, फिर होगी कुकिंग स्ट्रीम, पार्टी स्ट्रीम। फिर तो मैं घूमने भी जा सकता हूँ, पैसे भी होंगे, फिर घूमने वाली स्ट्रीम। अगर इसमें एक बार सिलेक्शन हो जाए ना, मैं छोड़ूंगा नहीं भाई इस कंपनी को। मेरे साथ वालों को भैंस की पूंछ 2 साल में पता है 60,000 सैलरी हो गई है। मेरा तो मेन अभी मोटिव यही है कि मुझे अपना घर लेना है। छोटा सा टाइट घर, छोटा छोटा। शादी हो गई आपकी? यस। बच्चे भी हैं मेरे तो। हाँ ना, कैसा भी हो खुद का होता है। हाँ, मेरे को अपना मकान चाहिए यार। मेरे बस 2-3 सपने रह गए हैं यार, ज्यादा कुछ नहीं है। 2-3 ही इच्छाएं रह गई है कंप्लीट करनी। एक अपना मकान चाहिए, फिर एक भाई के लिए कंप्यूटर बनवाना है बढ़िया सा, और एक मेरे को चाहिए गिटार। गिटार, घर और भाई के लिए कंप्यूटर, बस। मेरे को कार का भी मन था, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यार मैं बाहर तो कहीं जाता हूँ नहीं, और मेरे को कार चलानी आती है नहीं। मैं कार लूंगा भी तो मैं करूंगा क्या? बाइक बेटर है, लो मेंटेनेंस देन कार। बाइक भी कौन सा चलानी आती है मुझे। बाइक मेरे को पसंद नहीं है वैसे। बाइक में मैक्सिमम 2 ही जने बैठ सकते हैं बस। कहीं घूमने वूमने जाओ तो दूर दूर तो कम से कम 3-4 लोग तो जाएंगे ही। तो बड़ा व्हीकल का साधन होना चाहिए ना। बाइक तो उनके लिए सही रहती है जो ऑफिस वाले होते हैं, जिनको डेली सुबह ऑफिस जाना होता है, उनके लिए ठीक है। मेरे को तो, मेरा तो हमेशा वर्क फ्रॉम होम है जिंदगी भर। यार वो झाड़ियों में दिखाई नहीं यार, फक। एक तो लॉन्ग रेंज के इसमें स्कोप नहीं मिल रहा ना, 2x 2x, भैंस की कुछ होलोग्राम 2x।
वीडियो देखना चाहोगे तुम? बोर तो नहीं होगे? बहुत बड़ी वीडियो है लेकिन। नो नेम हेलो। वीडियो टाइम। ओके ओके ओके। बोर नहीं होना, ठीक है। वैसे उसमें सबटाइटल है मेरे ख्याल से। मेरे को वीडियो का टाइटल पता नहीं है, मेरे को हिस्ट्री में ढूंढने दे एक बार। Oh, what did you do to me? हाँ, मिल गई वीडियो। Oh, what did you do to me? Oh. तो मैंने तुम्हें नार्सिसिस्ट का मतलब तो बता दिया है, राइट? तो तुम कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? ऑटो जनरेटेड सबटाइटल है, वैसे सबटाइटल है नहीं। मैं वॉल्यूम बढ़ा दे रहा हूँ जिससे तुम्हें वॉल्यूम की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके पालती मार के बढ़िया ईयरफोन लगा के रेडी। जब मैंने ये वाला, अरे तुम लोगों को आवाज ही नहीं आ रही। फक फक। 7 मिनट की वीडियो का को बड़ी वीडियो बोलते हुए शर्म नहीं आती? चुपचाप वीडियो देख यार तू। One of the most prominent yet misunderstood words of the modern day. It's been linked to many recent cultural enigmas, such as the selfie phenomena and the overall rise of egoism in connection to the evolution of technology. Many have come to associate this notion of excessive self-admiration with narcissism, and in fact has nothing to do with a narcissist. People with narcissism are often the most insecure people in the room, yet they've established a way of showing themselves as anything but. An individual with the condition actually lives in a constant state of anxiety and hypervigilance. They become masters at reading people and manipulating perceptions. They are exceedingly observant and sensitive to the subtlest nuances. They perceive the world by looking at the reactions of others and conduct their own behavior accordingly. They are actors, shapeshifters, not one person, but two, the true self and the false self. The true self is as good as dead and buried, while the false self changes so often in reaction to life's circumstances that the narcissist has no sense of personal continuity. They only see the impressions of things as per how other people react to them and live that way vicariously. This is why the selfie has been recurrently used as a portrayal of how the narcissistic mind works. A selfie is taken by a person to establish their individuality and physical semblance on social media platforms. Yet they are rarely an accurate reflection of the user's true appearance. They will often take the picture at a certain angle, pose in a certain manner. They can edit the color and contrast, the changing of backgrounds, and the addition of other effects before uploading. How they look is irrelevant. What's important is how others perceive them to look, and more importantly, the esteem they will secure as a result in the form of likes and praiseful comments. Not everyone that takes a selfie is a narcissist, but it's this exact rationale in which the mind of a narcissist operates. Reality is immaterial. The perception of reality is everything. The root of the condition comes from the strict resistance to the feeling of being vulnerable at any given time, and they will constantly seek the admiration of others to counter this emotion. As a result, the darkest and most alarming trait of the disorder is forged, which is the lack, and in many cases, the total absence of empathy. They will easily exploit anyone in the pursuit of unwavering attention and affection while remaining indifferent to any harmful emanations. Narcissists
Narcissists cannot love in the way that neurotypicals do. They will only accept love on a conditional basis, as they perceive unconditional love as unmerited and non-reflective of the virtuous traits they constantly seek to exhibit. They wreak havoc in families because they go undetected, and damage their own children who need to connect to someone emotionally during the development stage. They are possessively controlling, or otherwise disinterested and revengeful. A person who has any sort of relationship with a narcissist will often feel like they're not being heard, they're not being noticed, but in fact being criticized and rejected on a chronic day-to-day basis. Narcissists are essentially in a constant state of rage, which is effectively controlled most of the time. It manifests itself only when their defenses are down, or adversely affected by circumstances, inner or external. The main question that is brought up regarding narcissism is the source of morality. Is a narcissist evil? Are they fully responsible for their actions? An estimated 85% of life sentence prisoners in the United States have been linked with narcissistic personality disorder, with many using it to apply for a sentencing discount before the courts on the grounds of diminished responsibility. This has been followed by intense debates among psychiatrists about the validity of the disorder and how it influences behavior. Some scholars argue that many narcissists have no malicious intent even when they commit heinous acts. They may victimize and abuse others, but not in the cold, calculating manner of the psychopath. They contend that a narcissist only hurts people offhandedly and absent-mindedly, and is more like a force of nature or a beast of prey, dangerous but not purposeful or evil. The truth is that narcissists are not prone to irresistible impulses, nor disassociation from stressful events or actions. They can tell right from wrong, and their impulse control is unimpaired. They simply lack the inclination to exert control over their conduct, as doing so would require the investment of mental resources which they would consider a wasted effort. The feelings, needs, priorities, and boundaries of others is immaterial to the narcissist when deliberating any sort of decision, big or small. Furthermore, many narcissists don't feel responsible for their own conduct. They often believe that they are victims of injustice and discrimination when facing retribution with past infractions. This is because their perception of life and their existence is discontinuous. They are a walking compilation of personalities, each with its own personal history. They do not feel that they are in any way related to their former selves, and therefore do not understand why they would be punished or judged for someone else's wrongdoings. So what do you do if you find yourself in a relationship with a narcissist? The real paradox is that no matter how much you have to offer, no matter how much you do, or try, or give, it's never going to be enough. And if you're never going to be enough, the one thing you need to do is stop exhausting yourself trying to be. The central premise needs to be you being the best version of yourself for yourself. When you have something good happen to you, take it to the people in your world who have been there for you before, who you know will listen, and who you know you can trust. So many people exhaust themselves in the process of trying to please the unpleasable narcissist that they forget about all of the genuinely good people they already have in their lives. Narcissism can range from mild to extreme, with the most severe form being narcissistic personality disorder, which affects about 5% of the US population. The condition is not curable, but it is treatable. The foundation of treatment will be psychotherapy to help an individual understand the causes of their beliefs and behavior. They can be taught and guided through ways of relating to others. Understanding the importance of considering the perspectives and experiences of other people is crucial to overcoming the effects of extreme narcissism. Medication is generally not thought to be effective in the treatment, though some medications may be used to manage conditions such as depression or anxiety that often accompany narcissism. If you're listening to this thinking your own character resembles some of the narcissistic traits depicted here, then don't worry. The fact you're even acknowledging that means you most likely don't have it. If you're listening to this and getting annoyed, thinking that whoever made ये वाला पार्ट तुम लोगों के लिए, जिसने भी क्रैब पहना, आई एम वन ऑफ देम, और ये हीरत सेम। जब मैंने ये वाला पार्ट देखा था मुझे इतनी हंसी आई ना, दोबारा से देखना, ठीक है, ध्यान से। or anxiety that often accompany narcissism. If you're listening to this thinking your own character resembles some of the narcissistic traits depicted here, then don't worry. The fact you're even acknowledging that means you most likely don't have it. If you're listening to this and getting annoyed, thinking that whoever made this video is somehow accusing you of being a narcissist, then there's a chance you could be one. But once again, don't worry. Having any form of narcissism, mild to severe, doesn't make you an evil person. Ultimately, the moral compass is established in an individual long before they develop the condition. There are many diagnosed with the most extreme forms of narcissism who are good people and live virtuous lives, which
which can be a formidable challenge, yet they manage to do so through sheer willpower and their devoted focus on ethical thinking and decision-making. They choose nobility over corruption. They take the uphill battle over the downward decision. Manage to do so. लेकिन अभी जो पार्ट आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। ये हमारे लिए ही है, ठीक है, जो हम सब सेम है ना, हमारे लिए ध्यान से। People and live virtuous lives, which can be a formidable challenge, yet they manage to do so through sheer willpower and their devoted focus on ethical thinking and decision-making. They choose nobility over corruption. They take the uphill battle over the downward slope. Thanks very much for tuning into Jim's channel. I'm Kazoo. Decision manage to do so. Good people and live virtuous lives, which can be a formidable challenge, yet they manage to do so through sheer willpower and their devoted focus on ethical thinking and decision-making. They choose nobility over corruption. They take the uphill battle over the downward slope. Thanks very much for tuning into Jim's channel. I'm मेरे को इसका सबसे सही पार्ट ये लगा था, यहाँ पे जब मैंने देखा था ना, मेरे को तब जाके लगा था कि हाँ मैं हूँ, मतलब ऐसा तो मैं बिल्कुल हूँ। and hypervigilance. They become masters at reading people and manipulating perceptions. They are ये वाला, they become masters at reading people and manipulating perception. They are, मैंने कहा या ट्रू आई एम द वन। एक मैं भी हूँ। अच्छी वीडियो थी यार ये। तो मतलब तुम लोग भी हो इसमें से, नीरज और नो नेम। हाँ, देखा कूल गेमर, बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब में देखने के लिए, कभी बोर नहीं होगा तू। बस चॉइसेस बढ़ाने की जरूरत है, बहुत कुछ मिल जाता है यूट्यूब में। इस गेम के बाद एक और वीडियो दिखा सकता हूँ मैं, अगर तुम्हें देखनी है तो। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, अगर तुम लोग हो इंटरेस्टेड। कंटेंट ही कंटेंट है मेरे पास, मजा आएगा तुम लोगों को, अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस देखने का शौक है तो। This is a simulation game set in a virtual world and वो does not represent real life. गेम के बाद क्यों भाई? Please play in अभी moderation. अभी भाई अभी गेम के बाद And play क्यों? responsibly. सही कहा, अभी भाई गेम के बाद क्यों भाई? सही बोल रहा है, अभी देखेंगे यार। बैक करो भैंस में, एग्जिट गेम भाई, अभी देखेंगे भाई अभी। सही कह रहा है नीरज, गेम के बाद क्यों? अभी। हाँ, आराम से बैठ जाओ फिर तो। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन हाँ इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारा टाइम वेस्ट और इंटरनेट वेस्ट नहीं होगा। Just let me know. रुक जा, पॉज 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 मैन, पॉज। जनता को तो दिखाते पहले। चलो शुरू करने जा रहा हूँ, रेडी हो ना सब? सबटाइटल ऑन है, ठीक है? ऑल गुड, रेडी? एक बार रेडी लिख दो सब बस, फिर मैं शुरू करता हूँ। रेडी? नीरज रेडी है, सभी रेडी है। चलो Just let me know.
parachute escape from a flying 727 somewhere between Reno. A search was made of the plane immediately. We don't know who he was, where he came from, or where he went. I expect that we'll keep looking until we find him or find out what happened. In the afternoon of November 24th, 1971, a middle-aged man carrying a briefcase walked into Portland International Airport and purchased a one-way ticket to Seattle, Washington. The man identified himself as Dan Cooper, and along with 36 other passengers and a crew of 6, he soon boarded Northwest Airlines Flight 305. Once aboard, Cooper made himself comfortable in the middle of the last row of seats on the right side of the cabin. He ordered a drink and had a smoke, because this was the 70s. Once the flight was cleared for departure, Cooper turned around and handed an envelope to flight attendant Florence Schaffner. Inside the envelope was a note featuring a handwritten message stating he had a bomb. Schaffner reluctantly sat down beside him and glimpsed what appeared to be 8 sticks of dynamite inside his briefcase. Cooper's demands were quite simple. He wanted $200,000 in cash and 4 parachutes. He also demanded a fuel truck to stand ready to refuel the aircraft once they landed in Seattle. Should they fail to comply with his demands, he threatened to, quote, do the job. Once the flight was airborne, Schaffner went to inform the cockpit crew, while another flight attendant by the name of Tina Mucklow remained by Cooper's side. By using a telephone in the rear of the cabin, Mucklow acted as an intermediary between Cooper and the rest of the flight crew for the remainder of the hijacking. For the next hour and a half, Flight 305 maintained a holding pattern near Seattle, while local and federal authorities scrambled to procure the ransom as well as the 4 parachutes. 10,000 $20 bills were collected from a local bank, while the owner of a nearby skydiving school supplied the chutes. At 5:45 p.m., more than 2 hours past its scheduled arrival, Flight 305 finally touched down in Seattle. By this point, it was well after sunset, and the aircraft was brought to a remote section of the tarmac. Once the flight came to a stop, both the ransom and the parachutes were handed over to Mucklow, who then brought them back aboard. In exchange, Cooper permitted 2 of the flight attendants as well as all the passengers to disembark, many of whom had not yet realized the flight had been hijacked. With the ransom paid and only 4 crew members remaining on board, Cooper told Mucklow to inform the captain that he wanted to fly to Mexico City. They were to fly with the landing gear down, the flaps at 15 degrees and below 10,000 feet. The lights in the cabin were to be switched off, and the aft stairway, which opens from the underbelly of the fuselage, was to remain extended. 2 of Cooper's demands could not be satisfied. First of all, the flight configuration he'd requested would not allow for a non-stop flight to Mexico City. As such, Cooper proposed a refueling stop in Phoenix, Yuma, or Sacramento before they all agreed on Reno, Nevada. Second of all, it was not possible to depart with the ventral staircase extended. Cooper agreed to retract the stairs on the condition that Mucklow remained by his side and taught him how to extend them once the plane was airborne. Parked for nearly 2 hours due to complications with refueling, Flight 305 was back in the air by 7:36 p.m. Less than 5 minutes after takeoff, Cooper told Mucklow to head for the cockpit and that from this point onwards he was not to be disturbed. The last time she saw Cooper, he was standing in the middle of the aisle as if though he was preparing to jump. Mucklow joined the rest of the crew, locked the cockpit door behind her, and some 3 hours later, Flight 305 safely landed in Reno. Once the flight came to a stop, the crew carefully ventured into the rear of the cabin, but there was no sign of Cooper nor the bomb. The aft stairway had been extended mid-flight and was slightly damaged upon landing. It seemed there was only one explanation for the hijacker's absence. At some point between Seattle and Reno, Cooper had strapped on a parachute, walked down the stairs, and leaped into the dark of night.
As soon as it became clear that Cooper was no longer on board, dozens of FBI agents converged upon the aircraft, only to discover a disappointing amount of physical evidence. A black clip-on tie, 8 cigarette butts, and 2 of the 4 parachutes were all that Cooper left behind. Evidently, he'd brought the ransom and briefcase along with him. In interviews conducted on the night of the hijacking, Cooper was described by the crew and passengers as a white male with brown eyes and dark hair. He appeared to be in his mid-40s and wore a dark trench coat, a dark suit, a white shirt, a black tie, and dark shoes. Soon after boarding, he'd also donned a pair of sunglasses. Based on this description, the FBI produced the first of several composite sketches. Before they could mount a search, however, the FBI had to figure out when Cooper abandoned ship. But that was easier said than done. None of the 4 crew members witnessed Cooper jumping from the plane, nor did the pilots of 2 fighter jets which escorted the flight between Seattle and Reno, which is not all too surprising given it was the middle of the night. Although the flight crew did report something odd. The last communication with the hijacker occurred at approximately 8:05 p.m. when the crew used the intercom to offer assistance, which Cooper declined. Within the next 10 minutes, the crew experienced what they described as an oscillation or vibration of the aircraft. At the time, the crew suspected it might have been produced by Cooper's jump, and a subsequent recreation of the hijacking supported that conclusion. Okay, so that took care of the when, but what about the where? While Cooper was very explicit about the flight's configuration and destination, he never specified any kind of route. In fact, Cooper grew so impatient with the slow refueling in Seattle that he dismissed the captain's request to file a flight plan and simply told him to, quote, get the show on the road. As such, the captain chose to fly along an airway known as Victor 23 without any input from Cooper. By using Victor 23 as a guide, authorities estimated the most probable location of the flight at the approximated time of the jump was about 40 kilometers north of Portland. And so, at the break of dawn, the FBI mounted an impressive search operation using helicopters, airplanes, and ground troops. The problem was, even if the estimated bailout point was accurate, Cooper's eventual landing or drop zone was far more difficult to pinpoint. The loosely defined search area covered a vast stretch of mountainous wilderness occluded by a dense forest, so it was truly like finding a needle in a haystack. Apart from the difficult terrain, the search was further complicated by low temperatures and inclement weather, which persisted for days. Despite their best efforts, authorities never managed to find a single trace of Cooper, nor the items he'd brought along with him. Having made little to no progress by early December, the FBI turned their attention to the $200,000 ransom. The money had been collected from the Seattle First National Bank, which maintained a ransom package of $250,000 just for such an occasion. Because of this, the serial numbers of the $10,020 banknotes given to Cooper had been documented in advance, a complete list of which were quickly made available to financial institutions, government agencies, and the general public. The intention was to make it as difficult as possible for Cooper to spend his money. Northwest Airlines and several newspapers even began to offer rewards to anyone who could find a note with a matching serial number. In spite of these efforts, no one ever did. That is until nearly a decade later. In early 1980, a young boy named Brian Ingram was building a campfire on a small beach in southern Washington. As he was digging into the sand, Ingram discovered 3 bundles of cash totaling $5,880. Having heard about the infamous skyjacking, Ingram's parents brought the severely degraded bundles to the FBI. The notes were promptly inspected, and sure enough, the serial numbers matched those of the ransom. Once the excitement subsided, however, the money managed to raise far more questions than it answered, the most significant of which was how? How did the money end up so far away from the drop zone? Looking at this map, it might be tempting to think that Cooper simply dropped some of the money, which then fell into the Lewis River. The bundles could then have been carried further downstream by the Columbia River before finally being washed ashore at Tina Bar, which is the name of the beach. Tina Mucklow, Tina Bar. Coincidence?
Yeah, coincidence. Anyway, the problem with this idea is that the Columbia River flows in the opposite direction. This has led some, including members of the FBI, to re-evaluate the initial drop zone assessment. For instance, if the drop zone was much further southeast, close to a river called the Washougal River, it is conceivable, albeit improbable, that the money floated all the way down to Tina Bar. Alternatively, the bundles may have simply landed on the beach if the flight path was further to the west. Even so, natural explanations struggle to explain how three independent, potentially free-falling and/or free-floating bundles of cash ended up at the exact same place on the same beach. To complicate matters, sediment from the riverbed was excavated and dumped onto Tina Bar as part of a dredging operation in 1974. And according to one analysis, the money was discovered above this layer of sediment. If true, that would mean the money came to rest at Tina Bar sometime after 1974. But a re-examination of that analysis found that what was believed to be a layer of deposited sediment might actually have been a perfectly natural layer of clay. Not only that, but the sediment was clearly dumped some distance away from where the money was discovered. Furthermore, when Ingram discovered the bundles, the rubber bands which held them together were still intact. This is significant because experiments conducted in 2009 revealed that this brand of rubber bands could not withstand exposure to open air or water for more than a year. So, unless the bundles were somehow protected from the elements, they must have become buried at Tina Bar within a year of the hijacking. The most probable explanation, therefore, seems to be that Cooper or someone else deliberately buried the money. Did Cooper survive and bury the money himself? Did someone else bury the money after stumbling upon Cooper's remains? If there is an explanation which does not require human intervention, it's managed to elude investigators for decades. Suffice it to say, this is a mystery within a mystery. Since Ingram's discovery in 1980, both Tina Bar and the grounds around the Washougal River have been subjected to numerous searches, but to date, there's been no sign of Cooper nor the rest of the money. From the very beginning, it was assumed by many that Cooper did not survive his daring escape. It would not make for a very thrilling conclusion to this story, but that's the thing about stories, they're usually far more exciting than reality. While there is no hard evidence for nor against Cooper's survival, the assumption that he fell to his death is not without merit. When Cooper leaped into the darkness, Flight 305 was plowing through a frigid rainstorm at roughly 170 knots, 10,000 feet above southern Washington. The wind was so violent that it ripped out a placard from the aft stairway, which was later recovered in 1978 almost directly below the estimated flight path. To say that Cooper was not dressed for the occasion would be an understatement. The ground beneath him, meanwhile, was obscured by multiple layers of clouds, which likely means that Cooper jumped without knowing his precise location. Even if he could see the ground and had a specific drop zone in mind, the parachute he selected was non-steerable, meaning he would not have been able to steer his descent towards a specific landing spot, thus precluding any potential coordination with an accomplice stationed on the ground. While Cooper expressed some familiarity with parachutes, his actual competence level is up for debate. It's widely believed that Cooper demanded 2 pairs of parachutes, 2 primary and 2 reserve, to make the authorities believe that he intended to take a hostage. That is precisely what happened, as the FBI contemplated but eventually decided against sabotaging the chutes, as they did not want to risk the life of an innocent civilian. But in their haste to obtain them, they unintentionally provided Cooper with a non-functional dummy chute intended for training purposes. This mishap seems to have gone unnoticed by Cooper because that dummy chute was one of the 2 missing from the plane. Not only that, but Cooper chose the older and technically inferior parachute out of the 2 primary chutes provided. So in both cases, it seems like Cooper made the worst possible choice. But there are other ways to interpret this information. For instance, it's possible that Cooper used the dummy chute not as a reserve but as a means to secure the bag of money. In fact, that is precisely what Cooper tried to do with the functional reserve chute. First, he tried to place the money in the chute's canopy before removing some of the suspension lines and wrap them around the bag. Perhaps he used the dummy chute for a similar purpose.
and Cooper's decision to use the older primary chute is not necessarily an indication of inexperience. It could also be a sign of familiarity, because the chute he left behind was a civilian luxury chute, while the one he used was a military chute. The argument is that Cooper might have been trained as, say, a paratrooper, and chose the older military chute because that's the one with which he was most familiar. And there is at least one other reason to suspect that Cooper had a military background. While the flight was in a holding pattern near Seattle, Cooper mentioned that the McCord Air Force Base was only 20 minutes away from the Seattle-Tacoma airport. At the time, that was an accurate assessment and might suggest a military background. Apart from the potential military connections, Cooper may even have had links to the Central Intelligence Agency. You see, the type of aircraft which Cooper chose to hijack, a Boeing 727, was also used by the CIA to covertly drop agents and supplies during the Vietnam War, a task for which the Boeing 727 was uniquely qualified due to its distinctive aft stairway. So it's fairly safe to assume that Cooper chose to hijack a Boeing 727 specifically because it provided a relatively safe means of escape. Whether he learned of this from the CIA or came to that conclusion independently is another question. However, the fact that Cooper chose to hijack a flight operated by Northwest Airlines was apparently random chance. When Tina Mucklow asked Cooper about his motives, he responded, "It's not because I have a grudge towards your airline, it's just because I have a grudge." He further clarified that Flight 305 just happened to be in the right place at the right time. Even so, it's clear that Cooper came prepared. He seemed to know a great deal about aircraft and aviation. He appeared to be familiar with the local terrain. He maintained a low profile to avoid a panic. He covered his eyes with a pair of glasses to conceal his identity. He left very little evidence behind, and he demanded 4 parachutes to force the assumption that he was taking a hostage. He was even cunning enough to reclaim the note which he'd initially given to Florence Schaffner. Apart from the name he wrote on his plane ticket, there are no other samples of Cooper's handwriting. But for all his planning and cunning, it seems Cooper did not give enough thought to his eventual escape. Not only did he fail to specify a route, but he was forced to make a last-minute destination change from Mexico City to Reno. He could have demanded more appropriate parachuting equipment like a pair of boots, a helmet, or jumpsuit. He could even have specified the ransom to be delivered in larger denominations to make it lighter and less cumbersome to carry. Presuming he did survive the fall and made it safely to the ground, he may then have had to make his way through a dense, partially snow-covered forest in nothing but loafers and a trench coat in late November. I get the distinct impression that Cooper's escape was much more of a leap of faith than a carefully executed jump. On the other hand, authorities never received a missing persons report matching the description of Cooper in the wake of the hijacking. This might suggest that Cooper did survive and that he swiftly and quietly resumed his normal routine. Furthermore, other hijackers have performed similar stunts, and many of them did survive even if they were quickly apprehended. Finally, the simplest explanation for how 3 bundles of cash ended up at Tina Bar is human intervention. At the end of the day, most of this is based on nothing but supposition. Without any concrete evidence of Cooper's demise, it leaves the door wide open to the far more exciting proposition that he did, in fact, survive. By the time the press got wind of the hijacking, the FBI had already begun to investigate a few potential suspects. Among them was a man in Portland with initials DB and surname Cooper. This Cooper was quickly eliminated as a suspect, but due to a mix-up by the press, the name Dan Cooper was confused for DB Cooper, and the rest is history. While Dan Cooper is most likely a pseudonym, there is a comic book series of the same name. The comic is written in French and centers around a Canadian pilot named Dan Cooper. While the comic was not translated into English nor sold in the United States before 1971, it was available in Canada, which has a large French-speaking population. Given that American and Canadian accents can be difficult to distinguish, it's possible that Cooper, who was described as having no discernible accent, was a bilingual Canadian. This might even be supported by something that Cooper might have said. You see, when the captain relayed Cooper's demands to air traffic control, he used the phrase negotiable American currency. It seems doubtful that an American citizen would specify American currency, so perhaps Cooper was not American.
The problem is, we don't know if this is a direct quote from Cooper or paraphrasing by the captain. For instance, notes taken by the crew during the hijacking merely contain the phrase negotiable currency, while testimonies provided by the crew after the hijacking include phrases like $200,000 in cash and circulated US currency. So Cooper might have been Canadian, and he might have taken his name from the Dan Cooper comics, just as he might have been American and might have taken his name from something or someone else. Nearly half a century has gone by since the hijacking took place, and in that time thousands of suspects have been questioned and investigated. It would obviously be impossible to cover all of them here, but let's take a look at some of the people that at some point or another have been suspected of being D.B. Cooper. Robert Rackstraw first became a suspect in 1978, and on the surface he seems like a solid candidate. He was a decorated army paratrooper and helicopter pilot. He had experience with explosives. He had an extensive criminal record. He had an uncle named John Cooper who was an avid skydiver. He was expelled from the army only months before the hijacking, which might suggest a motive. After all, the hijacker did say he had a grudge. When confronted by journalists and private investigators, Rackstraw would neither confirm nor outright deny that he was D.B. Cooper. Instead, he'd say things like, "I could have been," or "I would not discount myself." On the other hand, Rackstraw had light-colored eyes, which Cooper did not. More significantly, Rackstraw was only 28 years of age at the time of the hijacking. This is well outside the range of ages reported by the crew and passengers, most of whom believed Cooper was in his mid-40s. Kenneth Christensen first became a suspect in 2003 when his brother noticed certain parallels between him and Cooper. Christensen had briefly served as a paratrooper in World War II, and since 1953 he'd worked for Northwest Airlines as both a mechanic and a flight attendant. He was 45 years old at the time of the hijacking. He was left-handed, which Cooper might have been. For instance, Cooper used his left hand to interact with his briefcase, and the clip-on tie he left on board was affixed with a tie clasp applied from the left. Shortly before he died in 1994, Christensen had supposedly told his brother, "There is something you should know, but I cannot tell you." After his passing, his family discovered over $200,000 in his bank accounts. To top it all off, Florence Schaffner stated that photographs of Christensen bore a strong resemblance to Cooper. On the other hand, Christensen did not match the physical description of Cooper. He was both shorter and lighter. While Schaffner did see a strong resemblance, she remarked that Cooper had more hair, and that is supported by the composite sketches. And there was nothing suspicious about the large sums of money which he'd simply earned by selling land. Richard McCoy first became a suspect in 1972 when he hijacked a Boeing 727 and escaped via the aft stairway, much like D.B. Cooper. Because of the significant overlap between the two hijackings, some believe they must have been committed by the same person. McCoy used a fake name, he used a fake hand grenade to threaten the crew, he used handwritten notes to issue his demands. Both McCoy and Cooper used the phrase "no funny stuff" as a warning to the crew. McCoy demanded $500,000 in cash and 4 parachutes. McCoy also bailed out the back of the plane once they passed over his hometown in the state of Utah. Apart from the similar modus operandi, McCoy had also served in the Vietnam War as a demolitions expert and a helicopter pilot. McCoy did actually survive the fall and managed to evade authorities for 2 full days before he was apprehended and sentenced to 45 years in prison. Before his death in 1974, McCoy refused to confirm or deny that he was D.B. Cooper. On the other hand, McCoy was an avid recreational skydiver and even came prepared with a skydiving helmet and jumpsuit. He gave very specific instructions about the flight path. In addition to the fake hand grenade, McCoy also used an unloaded handgun to threaten the crew. He failed to retrieve one of the notes he'd given to a flight attendant. He was only 29 years of age at the time of the hijacking, and all 3 flight attendants were quite certain that McCoy was not Cooper. While there are meaningful parallels between these 2 cases, McCoy might simply have been a copycat who'd read about D.B. Cooper in the news. Dwayne Weber first became a suspect in 1995 when, shortly before his death, he supposedly told his wife, "I've got a secret to tell you. I am Dan Cooper."
Following his deathbed confession, Weber's widow recalled a number of fascinating details. She claims to have found a bank bag resembling the one used in the hijacking. She claims Weber had sustained a knee injury after jumping out of a plane. Weber supposedly had a nightmare about leaving his fingerprints on the aft stairs. And a year before the money was discovered at Tina Bar, Weber had allegedly paid a quick visit to the same location. In addition, Weber was a World War II veteran, he had an extensive criminal record, he matched the physical description, and he was 47 years old in 1971. On the other hand, Weber's fingerprints did not match any of the prints collected from Flight 305. Although, to be fair, there's no way to know if any of those prints actually belonged to Cooper. Furthermore, Weber's DNA did not match a DNA sample collected from the tie clasp. But once again, there's no way to know if the DNA on the tie clasp actually came from the hijacker and not someone else. What's so frustrating is that the FBI likely had a much better source of DNA at one point. If you recall, 8 cigarette butts were collected from the scene, and there's a good chance they were all suffused with Cooper's DNA. The problem is, that evidence was lost at some point and has not turned up since. William Smith first became a suspect in 2018. Smith served in the Navy during World War II and likely had some experience with parachuting. He was 43 years old at the time of the hijacking. He had dark brown eyes. He matched the physical description. He shared a certain likeness with the composite sketches, especially this speculative sketch of an older D.B. Cooper. A student named Ira Daniel Cooper, who was killed in World War II, attended the same high school as Smith. Smith worked as a yardmaster for a railroad company for most of his life, but in 1970 the company filed for bankruptcy. As a consequence, Smith lost his pension, which might suggest a motive. He could, for instance, have developed a grudge towards the airline industry for their role in bringing about the downfall of the rail transportation industry. It's further speculated that Smith could have used his knowledge of railroad networks to hop on a train and escape undetected. On the other hand, Smith spent his entire life in the northeastern United States. Given that the hijacking occurred on the other side of the country and was committed by someone who at least appeared to be familiar with the local terrain, Smith is not the most ideal candidate. However, the fact that Smith worked as a yardmaster is interesting. You see, the tie that Cooper left behind was recently examined using an electron microscope, which uncovered various metallic particles. Some of these particles, especially pure titanium, were quite rare in 1971. This might suggest that Cooper worked as a manager at some sort of chemical or metallurgical facility, or possibly a rail yard. If nothing else, I hope this limited selection of suspects illustrates just how difficult it is to be certain when you have so little evidence to work with. These 5 individuals look nothing alike, yet any one of them could be D.B. Cooper. Was Cooper really in his mid-40s, or did he simply look old for his age? Did Cooper really serve in the military? Which one of these sketches most closely resemble Cooper? In 2016, the FBI had to admit defeat and officially close down the case. Unless someone stumbles upon Cooper's remains or manages to track down the rest of the money, it seems there is little hope of resolution. Did Cooper survive? I have no idea. But as long as that possibility cannot be dismissed, the legend of D.B. Cooper will no doubt persist. मेरा माइक बंद है लॉल. इतने लोगों को सस्पेक्ट
किया ना, उसमें से मेरे को लास्ट वाला बंदा लगा कि हाँ ये हो सकता है वैसे। बाय बाय कूल। मैं तो एक ही वीडियो, पता है इस वाली वीडियो को मैं कितनी बार देख चुका हूँ, 5-6 बार। नीरज और कूल ने तो देखी हुई थी वैसे। ही सर्वाइव ऑफ कोर्स, सर्वाइव कर गया होगा, अगर नहीं किया होता तो बॉडी तो मिल ही जाती। कहाँ से है? मैं युगांडा। भाई तू कहाँ से है? ब्राजील। सेकंड लास्ट भी हो सकता है। सेकंड लास्ट एक या तो एक वो बंदा सेकंड लास्ट ही था मेरे ख्याल से, जिसने मरने के टाइम बोला था कि मैं ही डैन कूपर हूँ। वो भी हो सकता है, लेकिन लास्ट वाला मेरे को ज्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों। नीरज, नीरज स्ट्रीम देख रहा है नीरज? इससे एक सवाल है, मैंने देखा ना। हेलो, ब्राजील में मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रहती है, सही। नीरज, साउथ में ना क्या बोलते हैं, मैंने देखा है कि लोग ज्यादातर इंग्लिश बोलते हैं। तू भी इंग्लिश में बोलता है क्या? This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Team match. Let's साउथ go. वालों को हिंदी आम आती है ना, मैंने देखा। या तो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं या फिर हिंदी में बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में, First या इंग्लिश points में for the बोलते red team. Clear. हैं। तो आई वाना नो। Cover me. Nice shot. Reloading. ब्राजील में मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रहती है, पटा ले। मैं ऑलरेडी पटा के छोड़ चुका ब्रदर ब्राजील में। ब्राजील में मेरी गर्लफ्रेंड तब थी जब मैं मेरे ख्याल से 11th में था। यस, मैं 11th। हेलो अभिजीत। अभी तू लेट आया भाई, हमने अभी इतनी मजेदार वीडियो देखी ना। नीरज, मेरे माइंड में एक बड़ा मस्त आइडिया है, ऐसा रहेगा बताना। मैं सोच रहा हूँ कि कल Clear. मैं थोड़ा लेट नाइट स्ट्रीम करूँ, क्योंकि मेरे पास ना, आई एम फ्रॉम केरला ब्रदर, या तभी तो तुमने पूरी वीडियो देखी ब्रदर। Nice shot. तभी तो Target down. Reloading. तुम्हारा तो मेरे को पहले ही पता चल गया था ब्रदर, तभी मैंने तुमसे पूछा भी नहीं, तभी तो मैंने नीरज से पूछा। Enemy down. तो मैं सोच रहा हूँ कि कल थोड़ा लेट नाइट स्ट्रीम की जाए, क्योंकि मेरे पास कुछ वीडियोस हैं जो हम रात के टाइम में देख भी सकते हैं और आराम से गेम भी खेल सकते हैं। Clear. तुम लोग अगर Enemy down. कहते हो कि हाँ सही प्लान है तो बताओ।
कर सकते हैं हम लोग। क्या कहते हो? सही है प्लान। 2 to 3 at night I am available। 2 to 3 तो मतलब मैं तो पहले आ जाऊंगा, तू आ जाना 2 to 3। मेरे पास कुछ बढ़िया सी वीडियोज है जो हम रात को देखेंगे, वो बहुत मजा आएगा। ओके डन, ठीक। तो मैं कल 11:45 के टाइम पे लाइव आऊंगा, ठीक है? ठीक है, नाओमी गोइंग ऑफ, बाय 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 ब्रदर। ठीक है, तो मैं 11:45 के टाइम पे लाइव आऊंगा और फिर करते हैं मजे। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट बनाए रखूंगा ना। पहले एक गेम खेलेंगे, उसके बाद फिर वीडियोस देखेंगे 2-3, फिर गेम खेलेंगे, ऐसे। ठीक है ना? The red team is about to win. अबे ये चूतिया बार बार मुंह के सामने यहाँ से मारना भाई, पहले मारना। Reloading. Expired. ले भैंस की पूछ। जब मैं उस बंदे को मारने के लिए जा रहा हूँ तभी वो ले, दिल चोरी हो गया मेरा। वाह, Target down. No mercy. Enemy down. यस, मैं भी पहुंच गया 16 पे। Half of the match is over. Fuck! and मेरी the red खोपड़ी में team मारा इसने। is in the lead. Oh, what you do to me? Oh, what you do to me? एक सीरियस गेम खेलते हैं, उसके बाद अपन जाएगा। सैनो की खेलता हूँ और फर्स्ट पर्सन में मिलेगा नहीं गेम, थर्ड पर्सन में ये। ठीक है, शुरू करते हैं। मेरा कैमरा कितनी देर से ऑन है वे? बहुत देर से ऑन है क्या? नहीं ना, मैं डर जाता हूँ भाई कैमरे में ना आ जाऊं मैं। Oh, what did you do to me? वजन नहीं घटाएंगे तो शादी कैसे होगी? This is a simulation game set in a virtual भाई तो world बांग्लादेश से है and ना? हाँ, does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. बांग्लादेशी लैंग्वेज बोलूं? आगो गोला बड़ा मुंह बड़ा 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 बड़ा। तो मजा क्यों?
तो मजाक क्यों कर रहा था? मजाक करना गंदी बात है क्या? अच्छा तुम लोग भी वही हो मतलब। स्टैंड अप कॉमेडी में कोई जोक देखा नहीं, चप्पल पकड़ के सीधा पुलिस स्टेशन भागने वाले। इसने ये जोक कैसे कर दिया, इसके ऊपर तो मैं एफआईआर दर्ज करूंगा। वही वाले लोग हो तुम। गॉट इट। इट्स ओके। है हाँ अभी अभी गए। है जाओगे ना? अपना फोन नहीं लेके जाते क्यों? लेके जाते। क्या हुआ आगे रिजल्ट? वही मैं तो हर टाइम मेल ही चेक कर रहा हूँ खोल खोल के। अभी ये देखो। हाँ मैं तो ये देखो अभी मेल ही ओपन है मेरा। मैं फोन पे मेल ही खोल के बैठा रहता हूँ। वेबकैम ऑन है, यस आई नो। यार अभिजीत एक ढंग की गन नहीं मिल रही यार। एक लॉन्ग रेंज गन चाहिए मेरे को। अमेजोन से मंगा ले एडब्ल्यू। अच्छा तेरे को भी पता है एडब्ल्यू भी चाहिए अब। ओबीसी मिल चुकी है गाइस। अब एक वही चाहिए होगा। एडब्ल्यू नहीं तो कुछ तो मिल जाता, कार 98 मिल जाती, चल जाता कार 98 नहीं तो कुछ एस के एस कुछ तो मिल जाती। वैसे एस के एस ना ही मिले तो ज़्यादा अच्छा है, एस के एस मेरे को बेकार लगी यार। ये कौन सा स्कोप है? 2x 4x लगाते हैं, 3x गिरा देते हैं, 2x मुझे चाहिए नहीं होता। लाइट ग्रिप की ज़रूरत है नहीं अभी। इसको सिंगल मोड में डाल देते हैं, सर्कल पे चलते हैं। अभी वैसे तो क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में? घर वालों के पैसे उड़ा रहा है अभी? या कुछ काम धंधा के सोचा है नहीं सोचा है?
12th पास तो हो गया ना तू? वैसे तेरी फोटो देखी थी मैंने, बच्चा टाइप का लगता है यार तू। कभी कभी मेरे को डर लगता है कि मैं ऐसा कुछ ना बोल दूं कि इससे मेरे को हर्ट सा हो जाए। जैसे कुछ लोग हैं तो शक्ल को देख के लगता है ना बकचोद होंगे, तो थोड़ा वो लगता है मेरे को। बच्चा हूँ रे, बच्चा ही है ना, मेरे को लगी यार। व्हाट्स योर एज? या तो तू सच में बच्चा है या फिर तूने डीपी कई पुराने साल पहले की लगा रखी। नीरज एक बार अभिजीत की डीपी देख जरा ध्यान से, नहीं लगता है बच्चे से 18 साल का? हाँ तभी मेरे को लग रहा था कम से कम 22-23 का होगा, लेकिन हाँ मतलब मैं तेरी बातों से ऐसा लगता था मेरे को, लेकिन हाँ शक्ल देख के तो मेरे को लग ही रहा था तू 17-18 का ही होगा। सही समझा मतलब मैं। डोरेमोन हेलो। Oh, what you do to me? 2016 का है डीपी। डीपी भी छोटा है, वैसे भी तो छोटा ही है ब्रो। टीडीएम ऑलरेडी खेल लिया ब्रदर, और बताओ? अभी टीडीएम ही खेल के आया हूँ। और सब बढ़िया? मम्मी पापा सब ठीक है? पढ़ाई कैसी चल रही है? डिनर विनर की तैयारी हो गई? क्या बन रहा आज खाने में? कुछ स्पेशल या नॉर्मल? हाँ ब्रो सब मस्त है एकदम, सब मस्त है एकदम। नॉर्मली खाना बन रहा है? नौकरी की कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ये भी मेरे जैसा हाल है, मतलब जहाजात बहुत है। सही है, बिजनेस है मतलब, राइट? कूल। पहले मैं, जब मैं 18, 19, 20 साल का था ना, तब मैं किसी के बाद ऐसे कोई बोलता था ना मेरे तो पापा का बिजनेस है, मेरा तो हो जाएगा, मेरे को ना बहुत अजीब सा फील होता था, मेरे को गुस्सा भी आता था कि साला अपने पापा का बिजनेस ही तो संभालेगा। लेकिन आजकल मेरे को लगता है कि यार बिजनेस भी संभाल लेगा, बहुत सही है भाई। सही चीज़ है ब्रो। तेरा डैड तो मिलिट्री में था ना? हाँ, क्यों, कुछ काम है क्या? बिजनेस नहीं है तो? वैसे बाय द वे, अगर किसी के पापा का डैड का बिजनेस है तो मेरे को बताना यार, काम है मुझे कुछ। गवर्नमेंट मतलब पापा गवर्नमेंट में है, तो तू भी गवर्नमेंट में जाएगा या फिर क्या सीन है मतलब? या गवर्नमेंट में तो पैसा बहुत है मतलब? कैन यू इलैबोरेट? मिनिस्टर पीए प्लस लेक्चरर? मिनिस्टर पीए मतलब? पीए क्या होता है? पर्सनल असिस्टेंट आई गेस, पर्सनल असिस्टेंट ही होता है पीए। और लेक्चरर भी हैं, सही है, तब तो अंधा पैसा है सर। सही है यार, अंधा पैसा होने के बाद भी तेरे पास कंप्यूटर नहीं है भैंस। इसमें वैसे तेरे पेरेंट्स की गलती नहीं है, ये तेरी चॉइस ही होगी मेरे ख्याल से। तूने कभी सोचा ही नहीं होगा इम्प्रूव करने का। गॉट इट, पर्सनल असिस्टेंट, यस या। अगर तेरी जगह मैं होता ना भैंस की,
मेरे पास तो सच में भाई तगड़ा सा पीसी होता, तगड़ा सा रूम होता एक अपना, जिसमें फुल वाईफाई, बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं भाई। मैं तो बढ़िया पढ़ाई भी वहीं कोडिंग वोडिंग सीख के एनिमेशन एनिमेशन भाग भोसड़ा क्या क्या बना लिया होता, टीम वीम अपनी गेम वेम बनाने लग गया होता। अरे कई चीजें कर दी होती पैंस। जिनके पास पैसा होता है ना उनको यूज करना नहीं आता। अभिजीत गुस्सा तो नहीं आ रहा? मैं जनरली तेले नहीं कह रहा हूँ, मैं वैसे वैसे मतलब पर्टिकुलरली तेले नहीं कह रहा हूँ, जनरली ऐसे बोल रहा हूँ। गुस्सा मत मानना, बुरा मान जाएगा। बुरा नहीं मानेगा तो अच्छा है, मान जाएगा भी तो क्या हो जाएगा। स्ट्रीम पे तो नहीं आएगा, मेरा क्या उखड़ जाएगा उससे। हो जाए गुस्सा पैस। मुझे क्या करना है? पैसा हाथ का मैल है तो उसको सही जगह में बहाना फिर भाई, कर यार कुछ तो कर भाई। या तो तेरे लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दिक्कत ये भी है शायद। और तू भी मेरी तरह यूवी की तरह अकेला ही है शायद। समझ रहा हूँ मैं धीरे धीरे तेरे को, जितना ज्यादा तू डेली डेली स्ट्रीम पे आ रहा है ना, तेरी भी स्टडी कर रहा हूँ। और यार जैसी दिखाना उसी टाइम यार, यहाँ लेट के बैठा है यार सौड़ो। आ यूपीएससी की तैयारी फिर आईएएस। अभी तो कह रहा था कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वैसे वैसे मैं एक चीज बोलने वाला हूँ, इसमें भी गुस्सा मत होना ठीक है। मैं मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, लेकिन तू ऐसा सोचना कि मैं मजाक में बोल रहा हूँ ठीक है। जितना मैंने तेरे को इतने टाइम तक देखा है और अपनी स्टडी के हिसाब से बता रहा हूँ, यूपीएससी और आईएएस तो बहुत ऊपर है तेरे लिए, तेरे बस का नहीं है मतलब। क्योंकि मैंने कंपटीशन देखा है, और जो यूपीएससी और आईएएस वाले बंदे होते हैं वो ऐसे नहीं होते मतलब। जैसा तू है। आई एम सॉरी बट यही सच्चाई है। आई एम डिफरेंट नहीं यार। पता है, प्रोफेशन के हिसाब से या फिर जिस साइड में तुम जाना चाहते हो ना, उस हिसाब से इंसान की पर्सनैलिटी उसी टाइप की हो जाती है। जैसे जो साइंटिस्ट डॉक्टर वाले होते हैं, तूने देखा होगा स्कूल में उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है, कतई नर्ड होते हैं वो अजीब से ही। ठीक है, जिनको कुछ नहीं करना होता वो बकचोद होते हैं। उन्हें ऐसा देखा कि किसी को साइंटिस्ट बनना है और वो बकचोद है मतलब, नहीं देखा होगा तुमने। उसको डिफरेंट नहीं कहते, उसको कहते हैं कि ज्यादा ही बड़े सपने देख लेना मतलब ऐसा हो गया कि मैं ही अभी अगर स्ट्रीम पे बोलूं कि मुझे आईएएस बनना है तो तुम्हारे मन में आएगा है ना। क्या बोल रहा है, चूतिया वूतिया तो नहीं हो गया? आगे नहीं आएगा बता तुम्हारे माइंड में?
यूपीएससी की तैयारी फिर आईएएस का है यार। इसके लिए अलग ही बंदे होते हैं यार। वो बिल्डिंग अलग, उनकी बिल्डिंग ही अलग तरीके से बनाई बनाई गई होती है। खासकर जिनको कोई सा भी एग्जाम निकालना होता है, यूपीएससी, आईएससी, आईएएससी क्या, जो सीए वाले होते हैं, जो बैंकिंग वैंकिंग के होते हैं, उनका सीन ही अलग होता है यार। दिन भर इधर उधर कोचिंग क्लासेस, टेंथ से ही। और क्या बोलते हैं, ऊपर से शर्ट पहनी होगी, साइड बैग टांगा होगा, कोचिंग क्लासेस, सर पे आके क्या बोलते हैं, दुनिया भर की बुक्स पढ़ी होंगी, वो पढ़ना। और फिर क्या बोलते हैं, हम्म, हर जगह पढ़ाई की बातें। और हम्म, पढ़ाई की बातें तो नहीं होती मतलब उनकी, लेकिन वो मतलब देख के ही लग जाता है उनको, अलग ही होते हैं वो। मेहनत करेगा तो हो सकता है, मतलब पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी ना फिर, बात ये है। और पर्सनैलिटी चेंज होने में फिर टाइम लगता है। इसलिए तो जब मैं जब मैं ट्वेल्थ के बाद दिल्ली आया, और जब मैं 3-4 साल रहा ना, तब जाके मुझे पता चला कि यहाँ के बंदे क्या होते हैं। हमारे यहाँ ना, मेरे होम टाउन में क्या, उत्तराखंड में ही बोल सकता हूँ मैं। वहाँ क्या होता है कि वहाँ अगर तुम 10th क्लास में अपने घर वालों से बोलोगे ना कि मेरे को ओपन क्लास, मतलब ओपन स्कूलिंग से 10th और 12th कंप्लीट करना है, और जैसे मेरे को बैंकिंग की तैयारी करनी है, तो मेरे को किसी इंस्टीट्यूट में डाल दो और मैं 10th और 12th ओपन बोर्ड से दूंगा। उत्तराखंड में मुश्किल से 5% होंगे जिनके पेरेंट्स मानेंगे मतलब। यहाँ क्या देखा मैंने, यहाँ मैंने देखा कि मोस्टली मोस्टली टेंथ मोस्टली 9th तक बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद 10th 11th 12th सब उनका ओपन बोर्ड से होता है, और वो उस चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं जो उनको बनना होता है मतलब, उसी टाइम से, क्योंकि तब जाके वो कॉम्पिटिशन तक पहुंच पाते हैं। नहीं तो कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा। 25 पे करना है, अभी टाइम है। अभी टाइम नहीं है ना ब्रो, वही तो, यही तो लगता है कि टाइम है, टाइम है, फिर नहीं हो पाता ना। तुम्हें अगर 1 साल पढ़ना छोड़ो ना, उसके बाद फिर तुम एक बार बुक खोल के बैठना, तुम्हें ना पढ़ने का मन होगा, ना तुम्हें कुछ आएगा समझ। उसके लिए पहले से बिल्डअप ही वैसा हो ही रहता है इंसान, बहुत टाइम लगता है फिर वैसा बनने में। इसलिए तो मैं तुमसे हमेशा पूछता रहता हूँ कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। जैसे डेटशॉट भाई से भी पूछता हूँ, नीरज से भी पूछता रहता हूँ, एग्ज़ाम हुए क्या हुए, जॉब का क्या चल रहा है, उस चीज़ से। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पूछता हूँ, नहीं पूछता हूँ, बता नीरज, वो हमेशा ये पूछता रहता हूँ मैं, क्या चल रहा है, एग्ज़ाम हो गए, क्या हो गया, कौन से ईयर है तेरा, सही फाइनल ईयर है, इसके बाद क्या। क्योंकि अभी टाइम है, अभी टाइम है बोल बोल के तो ना फिर टाइम निकल जाता है भाई, कुछ नहीं हो पाता फिर। 12th तक लगता है, अभी तो 12th ही है, 12th के बाद हो जाएगा। उसके बाद फिर इसके बाद फिर लगता है यार अभी तो बहुत साल हैं। अभी तो जैसे 18, आजकल तो 18 साल में 12th हो जाती है, फिर लगता है अभी तो 18 साल का ही हूँ यार। 21 तक मज़े करता हूँ, फिर उसके बाद देख लूँगा। फिर 21 के बाद फिर ऐसी स्टेज में आ जाते हो कि फिर बुक खोल के भी तुम्हारे कुछ बस का नहीं नहीं हो सकता, मतलब मुश्किल हो जाता है सब। चलो अब अपन चलता है, बाय बाय। कल रात को रेडी रहना 11:45 तक, मतलब हाँ, अब 11:45 बोला, ऐसा नहीं कि मैं 11:45 पे तो मैं ऑनलाइन ही दिखूंगा। या तो मैं पहले भी लाइव आ सकता हूँ, या मैं बाद में भी लाइव आ सकता हूँ, मतलब आऊँगा लेकिन कल ज़रूर, ठीक है। और नहीं भी आऊँगा तो भी तुम्हें पता चल जाएगा, मैं कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे ही शायद से कुछ ना कुछ डाल दूंगा, तो तुम समझ जाना, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट। और क्या पता, अगर मेरी कल अमेज़ोन की मेल आ गई, जो मैंने टेस्ट दिया है उसमें मेरा क्लैरिफाई हो गया, तो फिर तो शायद पार्टी होगी, फिर नहीं आ सकता, या कुछ भी हो सकता है। पता चल जाएगा तुम लोगों को, तुम लोग तेज हो, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।